नमस्ते, वेलकम टू फ्री हिट 7 PM लाइव विद मी आनंद नरसिम्हन और मेरे साथ हैं द वन एंड ओनली मूछे हो तो अयाज मेमन जैसी हो अयाज मेमन। अयाज भाई, वो एक कहावत है ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। अब विराट कोहली ने अपने आप को बुलंद किया तो वहां से न्यूजीलैंड ने एक लास्ट बॉल में श्रीलंका को हरा दिया और WTC फाइनल में भारत को पहुंचा दिया। तो वही होता है कि यू हैव टू स्क्रिप्ट योर ओन डेस्टिनी, समटाइम्स यू हैव टू टेल फेट लिसन वर्क फॉर मी। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल सही है। हिम्मत से मरना मदद है खुदा। If you are हाँ, willing to show courage, then even God is beholden to help you. जैसे कहते हैं उर्दू शायरी जी क्योंकि आपने शुरू की थी तो जी। मैंने सोचा मैं भी अपना कुछ एक दो I'll put in my अरे क्यों नहीं, क्यों two नहीं, क्यों cent नहीं। two cents हाँ worth. लेकिन I think it's been a terrific day for cricket actually. जी। हालांकि the more exciting match was in Christchurch जहां पर हाँ न्यूजीलैंड आखिरी गेंद पे जीती. But this match also had the one which was played at Ahmedabad also had its moments today. I mean, ठीक है, ultimately it became DDD, dull and really draw. But a lot happened over the last 5 days to suggest that this has been actually a terrific series. And the two best teams in the world now going ahead to play the World Test Championship final. और क्राइस्टचर्च जैसा शहर है जहाँ पर अभी कुछ ही साल पहले ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा उसको कि बहुत ज़्यादा वहाँ प्राकृतिक आपदा आई थी। द होल सिटी वाज डेवास्टेटेड। मैं जानता हूँ Yes. शेन बॉन्ड मेरे अच्छे दोस्त हैं, वो वहीं से हैं, क्राइस्टचर्च से हैं, एंड ही वाज क्वाइट अपसेट कि जो हो रहा है वहाँ पर, और फिर काफ़ी वहाँ पर रिलीफ वर्क और काम चला था वहाँ पर। एंड फॉर क्राइस्टचर्च टू सी सच फैंटास्टिक क्रिकेट विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। खुशी की बात है कि फिर कि आपको क्राइस्ट चर्च में इतना एक्साइटिंग टेस्ट क्रिकेट देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना, स्पोर्ट ऑल्सो प्लेज द रोल ऑफ अ balm, a soothener for people to cheer about, something good to write home about. लेकिन न्यूजीलैंड हमेशा, ये न्यूजीलैंड टेस्ट क्रिकेट को भी एक्साइटिंग बना रही है। ये एक अजब बात है। जहां पे न्यूजीलैंडर जा रहे हैं या जहां न्यूजीलैंड खेल रही है वहां पर टेस्ट क्रिकेट एक्साइटिंग होता जा रहा है। Yeah, Anand, also you must acknowledge that kahin na kahin, because a lot of these young cricketers today, most of them have हाँ been weaned also on T20. So they always see the opportunity कि आपको 260, 70, 80, 300 रन बनाने लास्ट डे पर, जब पहले जो as the cliche goes, close shop, shut down the shutters, जब अगर आपको लगता है ऐसे कि कहीं मैच फंस जाएगी, don't go for it. अब ये है कि if I see the chance, semblance of an opportunity, I will go for it. तो आई थिंक वन हैज टू गिव क्रेडिट टू न्यूजीलैंड, खास करके केन विलियमसन, केन जिस तरह विलियम्स से है। उन्होंने चेस किया, सेंचुरी लगा के चेस किया टारगेट को. बट टेक नथिंग अवे फ्रॉम श्रीलंका. दे फॉट टिल द एंड, वेरिएंट एफर्ट. जी लास्ट ओवर तक आप कह सकते हैं कि दे कुड हैव गॉट 2 विकेट्स एंड वन द मैच. और फिर इंडिया जो है वुड हैव बीन ऑन टेंटर हुक्स हाँ इन कि द नेक्स्ट सब कुछ इन द अगले कमिंग मैच तक वीक. होता। आज कोई सेलिब्रेशन नहीं होता भाई, अबे सीरीज तो जीत नहीं गए, होता. WTC फाइनल पहुंचेगी नहीं, अगला टेस्ट श्रीलंका हार जा, यही यही दुआ करते होते, सब लोग से ही प्रेयर कर रहे होते। लेकिन एक बात बताइए कि क्या आपको विराट कोहली में वो सब चीजें जिस पर हम बात कर रहे थे कि देखिए मेंटल लैप्स इन कॉन्सेंट्रेशन है, 50 बॉल खेल के आप टिक नहीं रहे हैं, आप कन्वर्ट कीजिए, वो लैप्स इन कॉन्सेंट्रेशन मत होने दीजिए, क्या आपको वो सब कुछ दिखा? और मुझे सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा ये लगा जब उनका वो सेलिब्रेशन था, जब वो शतक बनाया उन्होंने, आराम से कामली अपना जो बैट रख के फिर हेलमेट ऊपर उठाया और फिर सबको, टीम को सबसे पहले कहा, और फिर अपना लॉकेट निकाल के फिर अपनी वेडिंग रिंग को एक किस देना, और कि परिवार और फिर टीम, ये मेरे लिए मायने रखते हैं, और इनकी वजह से मैं जो कर रहा हूँ अब कर रहा हूँ। ये बहुत डिफरेंट है पहले के विराट कोहली से जो बहुत ज्यादा गर्म जोशी दिखाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी अब दिख रहा है कि अपनी मस्ती और सब कुछ एक जगह, लेकिन जो एक व्यक्ति का स्ट्रगल होता है इंटरनल, कहीं आपको लगा उस एक लम्हे में वो सब स्ट्रगल दिख गया? मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात कही आपने आनंद, बिकॉज जो हम सब जानते हैं, जो इनका स्टीरियोटाइप था विराट कोहली का, कि ही इज ब्रैश इन योर फेस, ही इज अ बिट ऑफ एन एग्जिबिशनिस्ट, ही इज अ डेमोंस्ट्रेटिव गाय ऑन द फील्ड, ऑन तू मैं गाली गलौज वगैरह वगैरह. मे बी एक दौर था वो सब हुआ, बट उसके साथ साथ उनके परफॉर्मेंसेस भी जबरदस्त थे. और मुझे लगता है कि ये जो हमने देखा विराट कोहली को, जो बैटिंग जिस कंपोजर से बैटिंग की, जी जहां पर मौका उन्होंने देखा कि ये मेरा ड्राउट जो है 3.5 साल से चल रहा है, उसको खत्म करने का एक बहुत सुंदर मौका है, हसीन मौका है इस पिच हम्म पर. बट यू हैव टू स्टिल गेट द बेटर ऑफ द टीम, ऑफ द जी ऑपोजिशन, क्योंकि आप फंसे हुए थे. और पहले 5-6 गेंद ऐसी खेली आना, ऐसे लग रहा था कभी भी आउट हो सकते हैं, फर्स्ट सिक्स हाँ सेवन बिल्कुल। बॉल दैट ही प्लेड. हाँ And then he just kind of steeled himself.
And then with जी every delivery, he just kept getting better and better and more assured and maturity आई. और जैसे कहते हैं कुछ स्ट्रोक जो minimize the risk, क्योंकि ना जी सिर्फ उनको सेंचुरी, not just his own personal score, टीम भी जो है 480 का टारगेट था सामने. So I जी thought it was a very nuanced batting performance as well as a जी very nuanced and mellow celebration. When I say mellow compared to what he was earlier, but ये जी दिखाता है is the passage, is the evolution of a man, of a champion cricketer. और मैं तो ये मानता हूँ आनंद के between the 27th century and 28th century जो फासला जो उनकी जर्नी रही है जी विराट कोहली की, it is worth chronicling. It's a compelling story in itself. कि आप आसमान पे थे, आसमान से आप वर्चुअली आप जमीन के लेवल तक आ गए 3 साढ़े 3 साल में. Who would have thought there would be cries and demands for his ouster from the team? और उसके बाद आप जिस तरह से कमबैक हुई, पहले वो पाकिस्तान के खिलाफ जो वर्ल्ड T20 में उन्होंने इनिंग्स खेली जी लास्ट ईयर, वन ऑफ द इनिंग्स ऑफ अ लाइफ टाइम. फिर लाइफ टाइम वहां पर T20 में एक सेंचुरी बनी, फिर ओडीआईज में 2 सेंचुरी लगी. फिर सवाल उठे कि भाई टेस्ट की सेंचुरी किस कब बनेगी, 27 पे आप अटके हुए हैं. Then he made this 28th century. So the comeback has been quite extraordinary. It's all happened in the last 6 months, but it's been quite extraordinary. And it shows the growth of Virat as a player as well as a person. और आप बहुत सही कह रहे हैं. और कहीं ना कहीं इस भले ही एक डल एंड ड्रेरी ड्रॉ था, लेकिन भारत के वो जो 571 रन बने, उसमें बहुत सारी स्टोरीज भी आपको दिखी. एक तो शुभमन गिल, कॉन्ट्रास्ट देखिए सेंचुरीज में, वहाँ वो पंच कर रहे हैं, जैब कर रहे हैं, रन बना रहे हैं, सब एकदम एक एग्रेसिव मोड में खेल रहे हैं. यहाँ फिर विराट कोहली जो अपनी खुद की एक स्टोरी लिख रहे हैं, अपनी एक दास्तां अपने आप ही लिख रहे हैं. अब लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है कि मैं अभी बस आंकड़े सामने देख रहा हूँ कि शुभमन गिल ने 128 रन बनाए और विराट कोहली ने 186 रन बनाए, लेकिन दोनों के स्ट्राइक रेट में सिर्फ 4 पॉइंट्स का अंक है, 51.09 एंड 54.46. तो स्ट्राइक रेट लगभग आसपास का ही है, लेकिन इनिंग्स जिस तरह से वो छाप छोड़ जाता है आपके मन में, वो बहुत अलग है बिटवीन व्हाट शुभमन गिल प्लेड एंड व्हाट विराट कोहली प्लेड. ये भी अजीब बात है ना कि आप आंकड़ों को देखें तो भैया एकदम सिमिलर इनिंग्स होनी चाहिए, लेकिन उसको आप जब विजुअली देखते हैं और जब याद करते हैं तो आपको लगता है कि एक तो वो था जो लड़का जिसने कहा कि वो जो स्टेप आउट करके मैं पिछली बार आउट हुआ था वो एबरेशन है, उसके लिए माफी मांग रहा हूँ, 100 मार रहा हूँ. दूसरी तरफ ये व्यक्ति है जो कह रहा है कि मुझ में अभी बाकी है थोड़ी सी जिंदगी और मैं खेल सकता हूँ और भी. नहीं, बहुत कुछ खेल सकते हैं, बहुत सालों से मेरे ख्याल से जिस तरह से विराट ने परफॉर्म किया है. एंड आई थिंक ये एक साइन है, ये मेरे ख्याल से एक निशानी है, ये एक वार्निंग टू द रेस्ट ऑफ द क्रिकेट वर्ल्ड, परहैप्स द बॉलर्स, कि इनको सेकंड विंड मिली है. जैसा मैंने कहा, इन द वर्ल्ड T20 दे वे ही बैटेड, उससे पहले एशिया कप में जो बैटिंग की थी, फिर ओडीआईज में, अब टेस्ट में. तो यू आर सीइंग द कमबैक ऑफ विराट इन ऑल इट्स एंटायरिटी. और मुझे लगता है कि जैसा आपने कहा कि आंकड़े जो है, if you compare, you can't compare these stats because they come at different times during the innings being played. कोई शुरू में आया जैसे शुभमन गिल है, कुछ विराट कोहली जो his last 86 runs had 10 boundary hits and the first 100 had 5, and strike rate उसमें धीमा था because that was the need. There's I think it was Mark Twain who said lies, damn lies and statistics. So sometimes stats can lie. But बहरहाल ये है, I think अगर आप ओवरऑल मैच को देखें ना, तो हर किसी ने किस तरह से अपनी जिम्मेदारी निभाई, दैट इज इम्पोर्टेंट. या उस्मान ख्वाजा हो, जैसा I think we discussed Usman Khwaja a couple of days back. But he's been the highest scorer in the world in Test cricket over the last 12 months or 13 months since his comeback. 2.5 साल तक वो भी टीम से बाहर थे. करेक्ट. 6 सेंचुरीज लगाई है उन्होंने. He is actually their foremost batsman today, Australia. Correct. It's not Steve Smith, it's not David Warner, it's not Marnus Labuschagne, it is Usman Khwaja. Then you got two magnificent youngsters who I think we'll hear a lot about, Shubman Gill and Cameron Green. Cameron Green hitting his maiden century. Shubman Gill making or reiterating why he should have been playing from the first test perhaps. पहले से उनको लेना चाहिए था. And Virat Kohli, perhaps the most poignant of all, the way he's come back. A lot of people were saying ये शायद इनका आखिरी चांस है. हमने भी डिस्कस किया था. करेक्ट, हमने कहा था क्या उनको रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए. अब ये सवाल नहीं आएगा. अब इंटरेस्टिंगली ये है कि it's such a strong comeback that
going into the WTC final, this will be at the back of the heads of the Australians कि भाई यार ये भी फॉर्म में आ गया, शुभमन गिल तो है ही, रोहित शर्मा तो है ही, बाकी जडेजा, अश्विन, पर विराट कोहली भी फॉर्म में आ गया। लेकिन एक बात है यार भाई, ऑस्ट्रेलिया जो अब इंग्लैंड में खेलेगा, इंग्लैंड में खेलेगा भारत के खिलाफ, लॉर्ड्स में तो नहीं खेल रहे हैं इस बार, दूसरी जगह खेल रहे हैं, ओवल में खेल रहे हैं, सॉरी ओवल में, हाँ इसीलिए एडिलेड निकल गया मुंह से, एडिलेड ओवल नहीं, बी ओवल में खेल रहे हैं। तो ओवल में जो गेम खेल रहे हैं उसमें ऑस्ट्रेलियन टीम भी फुल स्ट्रेंथ पे होगी, उसमें आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि पैट कमिंस वापस लौटेंगे, मिचेल स्टार्क पूरी तरह से फिट होंगे, और जो टीम की जो अभी हेजलवुड वापस आएंगे, तो ये टीम एक पेसर 3 स्पिनर के साथ नहीं खेलेगी, वहां 3 पेसर और फिर शायद एक स्पिनर कहीं ना कहीं घुसाएं तो वो अलग बात है, लेकिन वहां ऐसा होगा और उनकी बैटिंग एकदम तगड़ी लगेगी। ट्रेविस हेड मिडिल ऑर्डर आएंगे कि नहीं, डेविड वार्नर वापस ऊपर आएंगे कि नहीं, वो देखने वाली बात है, लेकिन वो काफी सेटल्ड टीम आएगी जो इंग्लैंड में खेलने आएगी, और वो कंडीशंस जो हैं ऑस्ट्रेलिया समझेगी कि दोस कंडीशंस आर बेटर फॉर अस। नेथन लियोन may be just the only face, not even Todd Murphy or Kuhneman. Leon might be the only spinner in that mix, but they will bat deep, they will bowl hard, so it's not going to be easy, the WTC final. लेकिन absolutely not जी Absolutely not. बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आनंद, because I think what I mean, you have to forget कि ये सीरीज जो हो गई इंडिया में वो हो गई. Now when you go to England, it's a different set of challenges you're going to face. एक तो जैसे आपने कहा, थोड़ी सी इनकी जो प्रॉब्लम है वो डेविड वार्नर का फॉर्म है कि क्या वो अपने लय में आ सकते हैं. He's gone back injured. We'll know a bit of it when he comes and plays the ODIs against India. मैंने सुना कि वो आ रहे हैं और he's going to play. So कैसा फॉर्म है, कैसा टच है, कैसी फिटनेस है, ये थोड़ा सा इंडिकेशन मिलेगा. हालांकि टेस्ट मैच ना भूलें, WTC फाइनल इन मंथ ऑफ जून, सो ही हैज गॉट इनफ टाइम टू रिकवर. एक विकेट कीपर बैट्समैन का उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बिकॉज एलेक्स कैरी उतना नहीं कर पाए, इतना कुछ खास नहीं कर पाए, बट मे बी ही स्ट्रगल्ड ऑन इंडियन पिचेस व्हिच वर गिविंग अ लॉट ऑफ हेल्प टू स्पिनर्स. बट वो जो आप कह रहे हो ना कि उनका जो पेस अटैक है वो बहुत ही जबरदस्त बन जाता है व्हेन दे प्ले इन इंग्लैंड. Mitchell Stark, Josh Hazelwood, Pat Cummins, Cameron Green as the fourth support seamer, plus Nathan Lyon. और हमारे यहाँ इंटरेस्टिंगली एक प्रॉब्लम जो पैदा हो गई, आप तीन आपके पास ऑलराउंडर्स, आप किसको बिठाओगे? अक्षर पटेल मेड a lot of runs. क्या आप 3 स्पिनर्स तो खिलाओगे नहीं वहां पर? आप 2 खिलाओगे या 1 खिलाओगे? लास्ट WTC फाइनल वी प्लेड विद 1 स्पिनर. करेक्ट. we didn't play Ashwin. और उसमें से अब देखिए अक्षर पटेल ने सबसे ज्यादा रन बनाए लोअर ऑर्डर में जिस तरह से खड़े होके, लेकिन रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन मिलके मैन ऑफ द सीरीज हैं, जॉइंट मैन ऑफ द सीरीज हैं, क्योंकि दोनों ने रन भी लिए, विकेट लिए. जडेजा ने 135 रन बनाए, 22 विकेट लिए, अश्विन ने 25 विकेट लिए और करीब 110 या कुछ 115 रन बनाए. तो ऑलराउंड परफॉर्मेंस दोनों की तरफ से आया. तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग. इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी व्हिच इज अ नाइस प्रॉब्लम. द अदर थिंग, कोई बात नहीं कर रहा है, अय्याज भाई. चलिए अश्विन और रविंद्र जडेजा और अक्षर की बात करें. अगर मैं आपको कहूं इनमें से आप किसको चुनोगे दी ओवल में? हाँ, ये तो बड़ा एक अपने समस्या में डाल दिया मुझे कि हाउ डू यू पिक बिटवीन दीस टू. अगर आप, मैं मानता हूं कि इफ सपोज, अभी दिस इज लाइक clinging on to straws, but suppose Hardik Pandya was fit to play Test cricket, and I'm hoping कि हो सकता है शायद जून तक वो ठीक हो जाए. We'll have to wait and see how he performs in the white ball cricket now and in the IPL. But that kind of restores the balance or shifts the onus कि आपका pace bowling complement पूरा हो जाता है. Remember, we are without Bumrah this time. So there's Shami, there's Siraj, there's either Siraj or Umesh. And who else? तो अगर हार्दिक आता है as an all-rounder, then it extends your batting as well as gives you a pace bowling option which might be more necessary in England. हाँ, लेकिन तब तक शार्दुल भी आ जाएंगे. शार्दुल भी आ जाएंगे, but हार्दिक और शार्दुल में फर्क है बहुत. हाँ, वो तो है, मैं मानता हूँ, मैं बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन अब बीच में उसके IPL भी है. अब से लेके जून के बीच में IPL भी है, तो वो भी देखना पड़ेगा कि कौन IPL खेलने में उसके साथ फिट होता है. Between Ashwin and Jadeja,
I'm happy or I'm lucky not to be in the position that Rahul Dravid and Rohit Sharma are going to be in. कि अगर दो में से एक को चुनना है, तो it's a very very tough call. I would imagine that maybe a nose ahead would be Jadeja because of his batting record overseas, plus a far, his fielding prowess. But I don't see that it should not mitigate Ashwin's prospects by too much because he's such a masterly spin bowler and he's shown that repeatedly over the last 10-12 years. इतना ओवरसीज सक्सेस नहीं मिला है उन्हें, पर इतना ओवरसीज उनको खिलाया भी नहीं गया. It's a bit of both. Correct. And so therefore I would it's a very tough call to make. फ्रैंकली मैं तो ज़्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है और परफॉर्मेंस के बेसिस पे कहा जाए तो इंग्लैंड में जडेजा ने काफ़ी अच्छा किया है. चाहे जिस फॉर्मेट भी हो तो आप रविंद्र जडेजा की ओर लीन करना चाहोगे, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जिस पर मैं थोड़ा सा और बात करना चाहता हूँ. गोइंग बियॉन्ड द सीरीज एंड ऑल्सो इन दिस सीरीज, एक खिलाड़ी है जो चुपचाप अपना काम भी कर रहा है और हर मैच हर इनिंग्स में वो इम्प्रूवमेंट भी दिखा रहा है, और वो है के एस भरत. शिखर भरत को अगर आप देखें तो अब की बार इन्होंने 44 रन बनाए, काफी टाइम बिताया विराट कोहली के साथ. जडेजा के आउट होने के बाद वो थे वहां, टिके रहे. अक्षर पटेल बाद में आया, लेकिन जो 44 रन उन्होंने बनाए उसमें भी एक मेच्योरिटी दिख गई कि भाई ये एक बैट्समैन है जो अच्छा कीपर है, बहुत अच्छा कीपर है. कीपर बैट्समैन नहीं है, बैट्समैन कीपर नहीं है, या बैटर कीपर नहीं है, ये कीपर बैटर है. और कीपर बैटर ही हमें अच्छा चाहिए, क्योंकि अगर जिस तरह की पिचेस हैं, जो जिस तरह के इन्होंने डिसमिसल्स इफेक्ट किए, कैचेस पकड़े, किसी से हमें कोई कंप्लेंट नहीं आए कि शिखर भरत ठीक नहीं कर रहा. Right. ये No, I think it's a very important point. Very important point आपने जो raise किया है. See, he's दो चीजें हैं. एक तो ये है कि yes, he's had a couple of fumbles, but who doesn't? He's playing his first series and little nervousness, little being edgy is bound to happen. बड़े बड़ों के साथ हो गया तो इनके साथ भी होगा. पर उसके बावजूद और pitches भी कुछ इतने they were not very good for wicket keepers. आप देखें कि ऐसी pitches पर keep करना, especially against Indian spinners, Ashwin and Jadeja and even Akshar, is not easy. And he's done a good job. अब क्या था अब तक के your wicket keeper batsmen were batsman wicket keepers and they had all become stars in their own right. Whether you take a Rishabh Pant or an Ishan Kishan or even somebody like a Sanju Samson, they were all known for their batting prowess and wicket keeping भी करते हैं, so to speak. And कुछ argument ये भी था, कई लोगों का मानना है, and why not, because he's done it, कि KL राहुल को wicket keeping भी करवा लो भाई, सिर्फ बैटिंग भी मजबूत होती है और विकेट कीपिंग भी हो जाएगी. But I think they made a good choice in this series, partly because of luck, because Rishabh Pant was very badly injured and I hope he recovers fast enough. कि KS Bharat on these pitches, जब पता था कि pitches ऐसी खेलेगी, get somebody who's got a proven track record in first class cricket in India, who knows what these turning, these kind of spicy tracks will be like, and it's paid off. He's also batted well. That 44 he made I thought it was a very very controlled and mature innings. So I think so. वो अपने हक से, अपने performance से, he deserves to be in the squad for the World Test Championship final. And well, if he's part of the squad, then automatically he becomes the front runner for a place in the playing 11. और आप इंडिया में कीपिंग कर सकते हो तो दुनिया में कहीं पे भी कीपिंग कर सकते हो. It's like driving ना, आप अगर आप बम्बई में ड्राइविंग कर लेते हैं या कलकत्ता में, तो आप दुनिया में कहीं भी ड्राइविंग कर सकते हैं. कहीं भी ड्राइविंग कर सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं. नहीं, इस लड़के में कुछ बात तो है जो अच्छा लगता है, जो देखकर भी अच्छा लगता है. एक और बात मैं आपसे जानना चाहूंगा अयाज भाई, कि अक्षर पटेल, क्या हार्दिक पांड्या के अंडर जब उन्होंने खेला, उस सीरीज खेली, उसके बाद उनका वो एक स्विच फ्लिप हो गया है, या आपको लगता है कि हर खिलाड़ी का एक टाइम होता है कि व्हेन ही कम्स इनटू हिज ओन, तो ये अक्षर पटेल का वो टाइम है व्हेन ही इज कम इनटू हिज ओन? I think the second part is true. I think Hardik is of course an inspiration and an incentive. अगर आपको ऑलराउंडर बन के टीम में रहना है, so you are competing against the other all-rounders. Correct. Now, if Jadeja and Ashwin is a different kind of a spinner, Jadeja is very similar because left arm spinner है. पर उनके अलग वर्च्यूज है, उनकी एक्यूरेसी जो है, उनका एक्सपीरियंस जो है, उनकी जबरदस्त फील्डिंग जो है, and the ability to bat. I think what I like about Akshar is that he is not overwhelmed. जब से वो आए हैं at the international level,
He's been improving with every match. Now in this series he hasn't got wickets. Lekin batting up देखो तो he's he's emerged as the second highest run getter. And that's again on pitches where others have struggled or most have struggled. So you have to give him credit. और attacking batsmanship ऐसे नहीं है कि लटक के खेल रहे हैं, बहुत गलतियां कर रहे हैं, struggling, and no, he's playing with great authority. So it means that he's paid a lot of attention to his batting. अब ये है कि unfortunately as it happens, there's a plethora of all-rounders. अब आपके सामने Ashwin भी है जो बैटिंग भी कर लेते हैं. अच्छा, don't discount Ashwin as a batsman. He's a fine batsman. Then there's Jadeja. Then there's Akshar Patel. तो इतने सब आपके पास all-rounders आ गए. And of course Hardik Pandya and to an extent Shardul Thakur are also lurking somewhere in the background for different pitches. तो selectors, coach and captain के लिए मेरे ख्याल से एक बड़ा सरदर्द तो है, मीठा सा सरदर्द है, but सरदर्द जरूर है. Overall, अगर if you look back at the series, आपके लिए highlight क्या है from an Australia point of view, and then highlight क्या है from an India point of view? I mean, from the Australian point of view to start with, I think as I mentioned, the coming of age of Cameron Green, 23-24 साल के हैं, like Shubman Gill, the third player who I put in that same category, really exciting batsman to watch out for in the next decade, perhaps, is Shubman Gill, Cameron Green, and Harry Brook from England, who've been absolutely sensational. Phenomenal. And these are guys who are actually now, in a sense, threatening to usurp the kind of aura created by Babar Azam and Marnus Labuschagne. I'm not talking about the Fab Four, which is Kohli, Smith, Williamson and Root. वो तो है ही अपनी जगह, और आप रोहित शर्मा को भी इसी क्लब में include कर सकते हैं, who are match-winning batsmen and across formats. But Cameron Green, then there's Usman Khwaja, who made a most fabulous comeback, जब से वो वापसी हुई है उनकी, and he is also making up for lost time. 2-2.5 साल तो उनको बाहर रख दिया था, so he's now how he fares in England is going to be key as to where he finishes his career. Was he an all-round terrific batsman or not? He's made runs in Pakistan, Australia में तो 1.5 साल बना है, India में भी बना लिए runs. अब क्या England में भी बनाते हैं या नहीं? That's the challenge for him. And I think that somebody like Todd Murphy or even Kuhneman as spinners, as foils to Nathan Lyon, it's not bad. I think they'll both be they should be on the tour to Australia to England. खेलते हैं या नहीं playing 11 में, because I don't think they'll need two spinners. They've got a part-time spinner in Steve Smith as well as in Marnus Labuschagne. So Nathan Lyon and one of these plus 3 or 4 fast bowlers is going to be their bowling attack. जहाँ तक इंडिया का सवाल है, मुझे लगता है कि सबसे, जैसे मैंने कहा, शुभमन गिल has come, he's just stamped his class and his authority. अब आप उसको बाहर नहीं, अभी तो there's no if and but about whether he should play or not in the WTC final. And then the return to form of Virat Kohli, I think, is the most significant development or the biggest gain that has happened in this series. बाकी सब तो है, we know Rohit will play, we know that Shubman will play now, we know that Ashwin, Jadeja, Shami, Siraj, maybe one other, I don't know. I'm keeping my fingers crossed that Hardik Pandya fit ho jaye. That's a great option to have. But Virat coming back into form, gives the team, their dressing room, a certain amount or a great amount of assurance, and it puts a lot more pressure on the opponents. Final question. You think Sky and Rahul should now focus? अरे रविशंकर आ गया, मैं बस आज थोड़ा हम लोग शॉर्ट कर रहे हैं क्योंकि मुझे भी अभी जल्दी भागना पड़ेगा, एक और मेरा शो है, तो 8 बजे का मैं जो शो करता हूँ डेली लाइव CNN News 18 पे. तो रविशंकर का क्वेश्चन है, कैन इंडिया प्ले KL Rahul as a middle order batter in the WTC final because there is no confirmation on the श्रेयस अय्यर इंजरी. तो मैं उसी पे आने वाला था कि श्रेयस अय्यर को बैक इंजरी हुई है, हार्दिक पांड्या अगर इस मिक्स में आते हैं तो क्या वहां मिडिल ऑर्डर में KL राहुल या स्काई की जगह बनती है, या फिर आपको लगता है कि अब स्काई और KL राहुल को रीअसेस करके अपने आप को सिर्फ व्हाइट बॉल क्रिकेट पे फोकस करना चाहिए? गुड रविशंकर, यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन, थैंक्स. चलिए लास्ट क्वेश्चन. Good of Ravi to ask this question, and I'll throw a little, I'll throw the cat amongst the pigeons, and I'll say, अगर आपको एक और मिडिल ऑर्डर ऑप्शन चाहिए तो why not somebody like a सरफराज खान? जब तक he'll be fit, hopefully, he'll recover from his injury. उससे ज्यादा runs, I mean, who's made more runs than him in first-class cricket? Correct. And keep him. I mean, if he's in the squad by itself, that's a big leap ahead for him.
And somewhere you have to start, I think somewhere Mr. Gavaskar had said कि आपको, everybody keeps talking about his plumpness. Now, if you wanted zero-figure cricketers, then that will be taking it a bit too far. You need guys who can bat well No, and who I can think win matches for you. नहीं उसमें एक प्रॉब्लम, उसमें एक बात मैं बताता हूँ, क्योंकि क्रिकेट इज नो लॉन्गर अ यूनिडायमेंशनल स्पोर्ट एज वेल, एंड टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम सरफराज. I think the issue is not his plumpness or his bulk. The issue is not that. The issue was that he was lazy on the field. The No, issue that's was that unpardonable. the issue was that he was not somebody who was agile despite his bulk. See, there are players who know how to manage their bulk, and they're very agile despite their bulk. Yes. That was not there. He has an appetite for scoring runs, yes, but does he have the appetite to slug it out for 4 days in the field, and still play or field in whatever position the captain wants him to? That is where the problem was. The problem was not his bulk. The problem was that his movement on field was restrictive. See, you can score 70 runs, 100 runs, but if you're going to leak 15 runs on the field, 20 runs on the field, 30 runs on the field, then you've got a problem. The captain does not want to hide anybody on the field. Dhoni had to deal Correct. with that when he had to hide 3-4 players at the same time. Yeah. He had to hide 4 players out of 11, but he still managed it. But आज वो time गया. So taking nothing away from Sarfaraz's ability, but because then Sarfaraz is going to compete with the likes of Gaikwad, Rituraj Gaikwad, Mayank Agarwal, Prithvi Shaw, who if they sort out their injuries, their issues, they're all equally good. Plus they're multi-dimensional. तो वो एक issue है. I completely agree. I mean, you can't. There's no excuse for being lethargic on the field. वो तो है ही नहीं. I think maybe, I don't know if they're still doing it, but have a, please institute the yo-yo test again. Make sure that everybody who's going for the World Test Championship final and beyond, they've done away with yo-yo tests. They have their own benchmarks now. They have their own fitness benchmarks. So there is a certain expectation from everybody. If he meets that expectation, then he must be in the team. I'm just putting it out there. That's my contention कि आप middle order में options ढूंढ रहे हैं, because if you're taking a squad of 18, आजकल तो 18 नहीं होता है, 19-20 ले जाते हैं, because there's always this threat कि COVID हो गया, कोई injured हो गया, वगैरह वगैरह, and boards are rich to take a couple of players along. So it's a good situation to take somebody like a Sarfaraz. I'm not saying only him; it could be somebody else as a youngster on the squad. खेले ना खेले, लेकिन जो experience बनता है, it just pays dividends somewhere along the way. And I think he's done enough to be seen in that light. Well, let's hope that Shreyas Iyer recovers in time, क्योंकि वो IPL में शिरकत करते हैं कि नहीं, वनडे सीरीज में शिरकत करते हैं कि नहीं, देखना पड़ेगा, क्योंकि ये लोअर बैक इंजरी काफी रिकरिंग हो रही है. तो ये कोई बड़ी इंजरी है या फिर एक डेफिशिएंसी है, वो भी देखना पड़ता है. कई बार ऐसा होता है, भाई अभी मुझे पता लगा कि अगर आपका विटामिन डी B12 अगर डाउन है, तो भी वो लोअर बैक में आपको तकलीफ करता है. तो कुछ अगर आपके शरीर में न्यूट्रिएंट्स का इम्बैलेंस होगा, तो भी वो कहीं ना कहीं पेन में मैनिफेस्ट करता है. वो कोई बड़ी इंजरी ऐसा नहीं होती, बट आई एम श्योर उनका तो सब कुछ मॉनिटर किया जा रहा होगा, एंड देयर इज अ एक्सपर्ट टीम व्हिच हैज डिसाइडेड, इफ दे हैव डिसाइडेड दैट बुमराह हैज गॉट टू हैव अ सर्जरी इन न्यूजीलैंड, आई एम श्योर दे विल नो व्हाट दे नीड टू डू विद श्रेयस अय्यर आल्सो. लेट्स होप ही गॉट अ स्पीडी, लेट्स प्रे फॉर अ स्पीडी रिकवरी फॉर हिम. आज भाई, आज इसी के साथ यहाँ पर ही इस फ्री हिट को यहीं रोकते हैं, बट इस वादे के साथ आपसे कि जल्द फिर बात होगी. देखिए, आई टेक प्रॉमिसेस वेरी सीरियसली आनंद, तो आपको फिर वादा निभाना पड़ेगा. देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि हम बात करेंगे जल्दी आपको. हाँ डन. मुझे बरकरार होना. अब जाऊंगा, इसकी मरम्मत करने की जरूरत है. थोड़ा तेल मालिश और ट्रिमिंग करके उसको थोड़ा सा शेप करना जरूरी. पर ये कभी ऊपर नहीं आते. कोशिश की कभी आपने? नहीं. किसी और only या फिर घर में किसी, अच्छा ऐसा, या फिर घर में किसी और की आवाज सुनते ही फिर ऐसी रहती है अपने आप अपनी जगह पर. ये बहुत से राज आप पूछना चाहते हैं, वो किसी और दिन के लिए. चलिए, सी यू. ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय.